All right. Hello and welcome to Fellowship Funchayat. I am Vedant, Mahatma Gandhi National Fellow for Latur District of Maharashtra, along with Vishal, who is MGNF for Mumbai Suburban. So we'll be starting this video podcast for our entire MGN community. So the idea behind this was to just initiate conversations amongst fellows, random musings and learnings through shared experiences. Almost every single district of India now has an MGNF fellow or has had one in the phase one of this fellowship. And given we have 9 IIMs who are hosting fellows across different states, so there is a good chance that we might never meet each other, despite the fact that we are in all practical purposes colleagues. So what we plan on doing is random fellows from different states across different IIMs will be participating in these panel discussions, and Vishal and I will be the constants. Over to you, Vishal. Yes, and so we made a first video regarding कि क्या पर्पस है इस पंचायत का. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो I will make a quick recap as to what. As Vedant told कि it's supposed to be a platform for sharing अपने जो experiences है, learnings है, and ताकि अभी अभी एक साल जा चुका है. So in the coming year, I think things will get hectic. So we will need to be collaborating more. तो वो साल भर के कोलैबोरेशंस हो सके, बीट थीसिस वगैरह, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सब लोग आगे क्या करना है वो थोड़ा फिगर आउट करने वाले हैं कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेलोशिप. सो उसमें क्या करना है, उसके लिए जनरल विल हैव डिस्कशंस, वेरी रिलैक्स काम डिस्कशंस कि कौन क्या प्लान कर रहा है, किस तरह से कहाँ जाना है, या फिर ये फेलोशिप में भी क्या करना है, उसके बारे में कन्वर्सेशंस रहेंगे. एंड मुझे लगता है बियॉन्ड दैट एक अपना एक नॉलेज रिपोजिटरी सॉर्ट ऑफ रहेगा ये यहाँ पे, कि जो हमने एक्सपीरियंस करा, बीट लर्निंग्स, बीट फन, जो भी हार्डशिप्स थे, एंड एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ रहेगा ये. सो बेसिक पर्पस ये है. एंड वी फील कि लाइक अभी हम इस ग्रुप ने चालू किया है, more people from other IIMs and each of the cohorts will join, and it would be a group activity. ऐसा नहीं है कि like हम 2-3 लोग कुछ ये channel own कर रहे हैं. It's the ownership of channel is open to all the fellows from across India, whosoever wishes to take the lead. And ये बहुत natural है कि so a lot of people will need to take lead. So ऐसा है. और ये है कि यहाँ पे एकदम गपशप टाइप का एनवायरनमेंट रहेगा, एकदम चिल वाली बातें रहेंगी. सो चिल बातें करते करते एक अपन लोग थोड़ा फिगर आउट कर लेते हैं, जैसे कुछ पॉडकास्ट है वगैरह, तो उनमें ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्टली इंपॉर्टेंस की बात है, बट जो भी बातें कन्वर्सेशंस होते हैं, दे आर जस्ट हेल्पफुल टू अस. सो दैट्स द बेसिक पर्पस. ओवर टू यू संदेश. Yes, definitely a very good point. This I must say that this kind of initiative is really great, because coming from a journalism space, मैं बता सकता हूँ कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है. बिकॉज ये फेलोशिप का हमारा ये जो कोहोर्ट है, 660 फेलोज आर देयर इन द सेकंड फेज. तो इसका कोहोर्ट भी बड़ा है, बट हम मतलब the basic purpose of this fellowship is to connect all the district with each other, and fellows being the young professionals, तो उनका इंटरकनेक्शन में डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा कोई मतलब एक बेसिक आइडिया था. सो वाया दिस पॉडकास्ट, वाया दिस सीरीज, ये कनेक्शंस हम यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड इन द लास्ट 1 year of MGNF, the most important thing that I learned, that connections are way more important than money, because you can create a shitload of money from connections, but vice versa is not true. तो मतलब so overall it is a very good initiative, and I must congratulate Vedant and Vishal on this, because they really put much efforts into this. Because usually what happens is that we हम जब नागपुर में आते हैं तो बहुत चीजें बोलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर वो डिस्ट्रिक्ट में जाते ही मतलब वो गवर्नमेंट मशीनरी के जैसे हो जाते हैं, तो इट नेवर रियली अनफोल्ड्स. और ये जो क्या बोलते हैं, मतलब जो सस्टेनेबल चीजें हैं, मतलब हमारी जो आइडियाज है वो रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती. सो
डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर यंग प्रोफेशनल्स, वो डिस्ट्रिक्ट में जाके उस मशीनरी में अडॉप्ट हो जाते हैं. वो टच मी नॉट एटीट्यूड है ना, वो धीरे से अंदर आ जाता है, परकोलेट हो जाता है. कितना भी हम ना कहें, वो अंदर आ जाता है. सो दैट थिंग हैपेंस, बट इट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, आई मस्ट से दैट. यस. Thank And you. over to you, So, Vedant. no, it's all right. So, Sandesh, as you said, you are a journalist. Okay, Yes, just yes. as I believe majority of us in this cohort, as many fellows I have met, हम सब वो यूपीएससी के रिफ्यूजी कैंप को बिलोंग करते हैं. Yeah, How many of us UPSC. are yeah. मतलब ये कोहॉर्ट में Yeah. किसी को भी ऐसे पत्थर मार दो तुम, वो बंदा यूपीएससी वाला ही निकलेगा. मतलब ये जो सिलेक्शन, आई थिंक ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में यूपीएससी का जिसके सर पर पड़ा हो वही आना चाहिए. ऐसा कोई क्राइटेरिया Right. प्रोग्राम मैनेजर या डायरेक्टर ने लगाया. प्रिपरेशन से दुखाए हुए लोग हैं हम लोग. हाँ, प्रिपरेशन So, डेफिनेटली. So इंटरव्यू में I think I had this professor Vidula Venugopal और उसने मुझे पूछा कि so I said I was preparing for UPSC, so she just wanted a reassurance कि मैं वापस UPSC ट्राई नहीं करने वाला हूँ. And Yes. probably that was the defining thing कि हाँ इसको चलो Yes. ले लेते हैं फेलोशिप के लिए. नहीं, yes. Right? I said the same thing, Vedant. I said the same thing, but fingers were crossed behind my back. It was an online interview, so I had that freedom. So what about you, Mansi? Tell about yourself. Mansi, the only lady on the panel. Hi everyone. अभी Hello. ऑलरेडी सबने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है ये सेशंस किस बारे में होने वाले हैं. एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू नो व्हाट अदर कोहॉर्ट्स आर डूइंग, क्योंकि हमारे बीच तो काफी इंटरेक्शन होती रहती है, पर दूसरे कोहॉर्ट्स का क्या चल रहा है, वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा. एंड यस, थैंकफुल टू विशाल, उसने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक्चुअली कर रहे हैं हम लोग ये. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दीज फन सेशंस. And yeah, we'll go on chatting further. I think my initiative has been just to the idea level and to the creation of channel. But जो entire जो idea वगैरह, मतलब उसके बाद का जो process है कि ये कैसा shape लेगा, and वो सब combined effort है दो तीन लोगों का, वेदांत, संदेश और बाकी fellows भी. So ये जो नाम है पंचायत, it has been suggested by Vedant. So I feel जिस दिन नाम बना तो उस समय लगा कि यार बन सकता है ये कुछ काम. नाम एक बार डिसाइड हुआ तो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड, क्योंकि वहां यार ये कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ऐसा. पर भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आइडियाज तो सबके दिमाग में आते हैं. देयर शुड बी अ कैटलिस्ट जो वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाए. आइडियाज तो सोते सोते वक्त भी आते हैं, जागते वक्त भी आते हैं, वो भी है, कहाँ भी आते हैं आइडियाज, बट दैट मटेरियलाइजिंग दोस आइडियाज इज द रियल चैलेंज, आई थिंक. या दूसरे कोहॉर्ट से भी अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, होस्ट करना है या कुछ No, और we've already scheduled it. प्रोग्राम को Yeah. improve करने के लिए, तो you can come forward, of course. This platform will be owned by the MGNF community all over, not just Maharashtra and Sikkim cohort. ऐसा नहीं है. After October 2023, MGNF started MGN family only. The fellowship goes. Okay, so Dhananjay, what about your journey? सबसे बढ़िया तो ये नाम लगा मुझे, बहुत इंक्लूसिव नाम है पंचायत करके, तो एवरीवन विल फील एट होम. और इट वाज वेरी गुड इनिशिएटिव. विशाल वाज टॉकिंग अबाउट इट सिंस द फर्स्ट टाइम वी रिमेंबर कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, कुछ थॉट ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होने चाहिए. और अपनी फेलोशिप की स्ट्रेंथ यही है कि बहुत डाइवर्स एक्सपोजर है हर किसी को. एवरीवन हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. So it is a very good platform to express those experiences. And मतलब हम this is इधर भी देख one of सकते the हैं. first. Yes, sir. यस, हम इधर भी देख सकते हैं. मतलब वेदांत लॉ बैकग्राउंड से है, तुम और विशाल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से हूँ, मानसी आर्किटेक्चर से. So there is a diverse set of representation, rightly said. No, what I am saying कि experience में भी diverse है कि हर किसी के district, हर किसी के experience. And this is one of the first kind of fellowship जिसमें all over India every district has one fellow. So it is a very. हाँ यार, इस बात का मुझे काफी बड़ी चीज लगती है कि none of the fellowships were as geographically distributed as ours. कि मतलब अंडमान के भी फेलोज है, MGNF कारगिल है, MGNF जैसलमेर है, MGNF लक्षद्वीप भी है. तो that's kind of big deal. And plus the kind of remuneration or in terms of जो भी arrangement and academic setup दिया है, it's kind of unprecedented across India.
So I By feel the way, कि So yeah, can it we has to be start talking kept about the districts that we are in? yeah, by yeah, the we way, can. I must say it feels very good to talk something positive about this fellowship. Yeah, It really yeah. feels After great. Yeah. bitching so much about it in AM After and all. so many Yeah, yeah. days, after so many months, when you're talking so good about this fellowship, because it so happens is that we get so included in the system that we really forget that we are a Yeah. part of fellowship, not the system. We Yeah. so yeah. All right. So, So I'll start. Vedant, you start with Yeah. your district. Yeah, sure. Latur. Like I said, I'm posted in Latur district of Maharashtra. And I believe none. I mean, how many of us have actually visited Latur in the past? Like Vishal, you have. Yes. Yeah, just Yeah. Latur is very near to my home place, so I Right, visited right, I it have right. never visited Latur. right. Never Because wish there's to nothing visit. to be when visited over there. when I reached the district and then eventually started talking with other people and like Patil sahab, आप तो Pune से हो, आप तो Pune Mumbai वहाँ पे रहते हो. So that's when I started thinking, yeah, I mean, this region of Maharashtra, I would never have visited in my life if it was not for this fellowship. And I mean, not just visit, like लोग तो passing में ऐसे visit कर लेंगे, but stay here and work for 2 years and interact with so many people across the spectrum. So yeah, my journey, the journey of my life has been that I was born and brought up in Pain Taluka of Raigad district, and then for 10, 11 years I lived in Pune, and then I moved to Latur for this work. So basically, it has gone from MH06 to MH12 to MH24. So that is how it is. Great. And And right, I talking mean, about okay, go ahead. no, okay, fine. What was your? So talking about my journey, and my journey has been a sequence of cohorts. So I have been to सैनिक स्कूल, तो वहाँ के 4 साल का वो वाला ग्रुप या फिर कोहॉर्ट बोल सकते हैं. Then 11th and 12th is some पुणे में education हुआ. Then VNIT 4 years in Nagpur. Then it's like अभी I'm Nagpur में. So it's a sequence of ये हर 2-3 साल Back बाद to the जगह base. बदल रहा है. And I have come back to the base. So, and I really feel homely and nostalgic in academic modules. So Yes. it's fun time here. Great. Yes. Yeah. For me also it was like ये मतलब आपके लिए तो बहुत सीधी सादी जर्नी हो गई. विशाल तो तुम फिर से बेस में वापस आ गए. फॉर मी इट्स बिन जस्ट ये जो बोलते हैं ना मराठी में उसको बोलते हैं नागमोड़ी रास्ता बोलते हैं उसको. Nagmodi. So Nagmodi is like snake, a path of twists and turns. Yes, it was a path of twist and turns for me because I'm basically from Solapur and I went to Pune to pursue graduation in science in Bachelor of Science. But somehow I realized that UPSC is better than all of the fields that are currently there in Pune. And then I went to Chanakya Mandal to pursue UPSC. And just like that, 4 years passed. And after two UPSC attempts, I realized that I had to do something else. And then went into masters in journalism and mass communication. Did that very good. And when I got a placement offer from BBC, at the same time I received confirmation from MGNF as well. So I was at a crossroads again. कि मतलब क्या करे, MGNF करे या जर्नलिज्म करे. और ये बीबीसी में जर्नलिज्म वालों का बीबीसी में जॉब मतलब ये तो गवर्नमेंट Big की deal है नौकरी भाई. है. BBC में आप जा रहे बीबीसी इज big deal लाइक है. गवर्नमेंट जॉब पर जर्नलिस्ट. मतलब जर्नलिज्म में कोई तुमको 5 days a week तो नहीं देगा. So it was a difficult choice for me. What? Sorry, It's Dhananjay. like thesis of journalism. Yeah, yes, it is. But सोचा कि मतलब there I always had a thing for public policy, so I decided to let us experience with MGNF, and I'm blessed. I must say that this fellowship इसकी वजह से बहुत एक्सपीरियंस आया है. कोल्हापुर तो पूरा मतलब आई मस्ट से दैट 100% जो तालुकाज है वो घूम चुका हूँ. वर्किंग ऑन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. शिवाजी महाराज के मावलाद में जितना नहीं किया उससे ज्यादा तुमने किया है. नहीं, I'm not saying that.
No. I think we But must avoid anything related to those kinds of statement. Currently, it's no. an hot That boil in would be very Maharashtra. objectable thing because in these days, किधर So का भी we'll have a किधर भी- quick talk, 2 minutes each from Dhananjay and Mansi, and then we'll wrap Yes. it up. Like it's like 9 minutes to go Should again. I go first or Dhananjay, you want to speak? Yes, please. Oh my Yeah. God. Yes, please. Okay, fine. So, like Vedant said before, that he would have never visited Latur. Similarly, I would say I had the opportunity because of my profession, or fortunately, I had the opportunity to go to many places around India. But in Maharashtra itself, I would say I have not visited I'm posted in Satara district, which is like the neighboring district to my hometown, that is Pune, and I have not That's so visited that comfortable. also. Yeah, fortunately or unfortunately, I will always say, because yeah. But I haven't visited Vidarbha, Marathwada region, and don't have much knowledge about that. But yeah, because of this fellowship, I think I'm getting to know my own state as well, the different parts of the state, which I was not much familiar with. And yeah, I had never wanted to pursue a UPSC, Oh, but that's yeah, so many of cool. the people. That's a That's a cool very thing good to thing say to in a say. cohort. Yeah. In cohort of ours, that's a cool thing to say that मैं No, but यहाँ मैं it kind UPSC of से नहीं gives आया me, हूँ. it is cool that way, but I feel a little bit of complex because all around the people are so smart and they know so much about, the policy making part, or the in general knowledge is much more. So, but I feel it is a great opportunity for me to learn from them as well. And yeah, coming to my district, at first when I moved from Pune to Satara, I was a little depressed, I would say, in the first impression, because I was expecting a little better district for Satara to be, but it was because from a metro city to a small town. But over the time, as I explored the place, I started liking it more and more also, because it has a lot of tourism related places. And yeah, so now I've kind of formed a nice bond with my district. But yeah, there are other frustrations as well with the system and all, but it's overall it's a nice experience, learning and good experience, especially That's with the cool. fellows. We keep visiting each other's Right. districts and हाँ यार, मुंबई having fun. पुणे डिवीजन का कनेक्टिविटी काफी अच्छा है. आप 2-3 घंटों में जा सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द गाइज कम टू हैंग आउट इन पुणे. सो ये लोगों का सब एकदम ऐसा चिल टाइप ग्रुप बन गया है कि ये लोग हैंग आउट भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं रेगुलरली, एंड बस चिल है उनका. तो धनंजय तुम बताओ भाई. Dhananjay. Sangli was very far from home. I am from Jalgaon, so जब mail आया मैंने देखा भाई Sangli कितना distance है, like 700 kilometers almost. So it was first time to come in Sangli, and like experience was good. Sangli is very decent district to work and all, great experience. मेरा भी background, I was like into MBA only, so that's why I choose fellowship कि IIM का भी tag है, administrative भी setup है, थोड़ा approach बढ़िया. and experience भी हो जाएगा 2 साल का, rather than just doing plain MBA, management, public policy and all that, and it's paying like good यार. कलेक्टर सर Yeah. या फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा एक्सपोजर है. आईएम से बहुत अच्छी एक सपोर्ट है, एक बैक एंड सपोर्ट. इट्स गोइंग गुड. ये लोग काफी आउटसाइडर्स में से कि we are so particular. Marathi guys are so particular about distance of their working place from their hometown. So I'm also looking forward to those kinds of interactions कि we start looking things in terms of cultural metrics में कि कौन सी चीजों पे कहाँ पे कैसा ये है. एक cultural interactions भी रहेंगे हम लोगों के. So I'm really looking forward towards that. देखते हैं गाइस, हम लोग अभी क्लोज करते हैं मीटिंग. ये जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, एंड we'll try to It was really nice make it seeing you more all. streamlined. Yeah. Yes, it was So nice. guys, Even though let's meet. introduction, We are going to meet even though physically in the introduction, I lobby. think it was nice fun, Yeah, although yeah. it's just an introduction video. Recording. Definitely. Yes, guys. Chalo then, we'll meet in the lobby in 5 minutes outside. Chalo guys, 205. bye. Yes, bye.